Today we are going to discuss about the last some portions of our syllabus. इसमें सबसे important है पंचायत राज system. We will say it as पंचायत राज institutions. पंचायत राज institution है then regional specific and group specific planning programs. So these two programs which is been promoted mainly by planning commission ने बनाया है region specific and group specific. One is for agriculture purpose and another is for backward regions के लिए, mainly intended for developing the backward region. So today we will discuss these three major topics. So when we say about the Panchayati Raj, before that we want to understand what is Panchayat. So we know Panchayat, it's a name given for the local government system in India. We have panchayats, we have villages, we have taluks, we have blocks, we have districts. As a multi-layer system we will have. So basically, panchayat is a local government system that is being practicing in India. So earlier it was like that. There were local panchayats which is being led by the elders. Elder people ने एक गांव में अपना सा एक jurisdiction बना के बहुत लोग होगा उसके अंदर उन लोगों को कंट्रोल कर रहा था. There is no legal value for that in the early time. ऐसा था, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सपोर्ट इसके ऊपर नहीं था. So उसी टाइम में there were 5 peoples who were, वो गांव का सबसे बड़ा आदमी लोग होगा. They were making decision. That is why it is known as Panch. Panch means 5. So Panchayat, consisting of 5 persons. In simple words, it is the Panchayat is a council of elders representing elders. तो वो लोग डिसाइड करेगा कौन सच है, कौन झूठ है, क्या झूठ है, तो how to deal with a particular situation, how to deal with a particular problem, ये सब वो लोग डिसाइड कर रहा था. Later, this has been shifted to village level, block level and district level. ऐसा गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने बना दिया है, क्योंकि these are the grassroots level of planning system in India. If the planning commission who were sitting in Delhi or in a metropolitan city can't decide what is happening and what will do in a rural area, extremely rural area, उसी area पे क्या कर सकेगा? If they were deciding from that, the output will be not suitable for that particular region. तो क्या कर दिया है? There were development and planning from the grassroots level. It's a Gandhiji's vision. ये गांधी जी का विजन था. This Panchayat Raj system. Bottom to instead of top to bottom planning. The planning is mainly from bottom to top. Bottom से बोलेगा हमारा problem ये है. We are facing this problem, and most suitable output or suitable solution for this problem is this one. ऐसा बोल सकता है because they are the affected person and they will have the solution. So from the centrally they can identify, oh yes, they have a problem and this will be the much suitable problem. So they just want to verify it whether the solution is appropriate. So this is considered as one of the best method for planning. So this is actually happening in Panchayat. So what is this Panchayati Raj? It's a form of government at the village level where each village is responsible for its own activities. The villagers or the Panchayat has given certain power. कुछ power दे दिया है. अपना से अपना गांव के अंदर, अपना विलेज के अंदर कुछ काम करने के लिए, कुछ डेवलपमेंट लेके आने के लिए, they have given power. It is not the whole power,
ऐसा नहीं है. There is some control from central government. There is some government control from the state government as well. वो लोग बोलेगा, they will decide. The state government will decide how much power should be given. But the constitution says that there should be a provision coming under the directive principles के अंदर आ जाता है. तो इसको तो जरूर देना ही है, ऐसे बोलता है. So it's a 3-tier system है. Administrative levels. It consists of village level है, तालुक block level है, and district level है इसके अंदर. The amendment of 1992 contains the provision. ये लेके आया है 1992-1993 में. This amendment, पंचायती राज amendment लेके आया है. The power and responsibility of the panchayat for preparation of plan for economic development and social justice. Economic development के लिए and social justice के लिए there will be पंचायत. पंचायत decide करेगा, plan बनाएगा. And the system of panchayat will not be controlled by the social. अभी इसका election process is not along with the state government का legislative assembly election के साथ नहीं है. This is extremely different है ये जो concept. The rural development is the important objective of this panchayati raj. As we know, municipality, corporation ये सब पुराने पाले से development होगा. And even if it is being controlled mostly by central से कंट्रोल करने से नहीं तो स्टेट से कंट्रोल करने से भी it will reach to the cities and municipal areas. Urban area में ये तो जरूर आएगा क्योंकि they have that much of transportation and communication facilities. But in the rural area, it is very difficult. So the Panchayati Raj is aiming to develop the rural areas. And as per the constitution, it should be established in all state. All state में ये तो बनाना ही है. Right now, we have established that in all the state except Nagaland, Meghalaya, and Mizoram. Why? Because they have given another kind of ruling systems. Union territory देखना same except Delhi, all the union territories have the Panchayati Raj system. So Nagaland, Meghalaya, Mizoram इसी area में क्या-क्या है? The scheduled areas and scheduled tribes state का अपना सा एक तो दिया है. Other than this, the hill areas of Manipur का अपना सा एक council दिया है. Then Darjeeling district of West Bengal, for which Darjeeling Gorkha Hill Council ऐसा बोल के दूसरा दिया है. But instead of Panchayati Raj, other substitutions were given. And also in this, you want to understand there has been given certain reservations. Panchayat बोलने से there will be local बोलने से, not now. From the early time, there were men dominancy. Here. Still, if you can see to some extent there is men dominancy here. To avoid that, they have given certain reservation for the women. 1/3, that is mean if there is 100 seat है, उसमें से 33 seat, minimum 33 seat should be given to women. Then 1/3 seat should be reserved for SC/ST, also reserved for women. ये तो जरूरी है. 1/3 तो SC/ST population को भी देना है. And 1/3 office of the chairpersons at all level is reserved for women है. ऐसा है. तो पंचायत का सबसे ऊपर होगा chairman होगा, नहीं तो chairperson होगा. So that post is also reserved. 1/3 should be given for the women. So women representation has been secured using the law itself in Panchayati Raj system. So rural area development हो गया उधर, women protection हो गया, women का भी upgradation इसी time में होता है. Along with that, SC/ST population
को भी ज्यादा representation इसके अंदर लेके आया है. So all these concepts. Other than this, if you look, ट्राइबल एरिया में अपना सा एक सेपरेट दिया है, हिली एरिया में अपना से एक जगह दिया है. So it is mainly intended for backward regions and the rural regions of India. Those population who are considered as the suffering population और थोड़ा सा backward है, उन लोगों को भी लेके आने के लिए this पंचायत राज has been mainly intended. Then committees relating to Panchayati Raj. So Panchayati Raj doesn't happen once एक दिन में ऐसा नहीं आया है. इसका तो बहुत कुछ committees बनाए हैं इसके ऊपर पढ़ने के लिए. Even in early times, we are having the Panchayati Raj. So it is not constitutionally accepted नहीं था. Only after post independence we are having dealing with the Panchayati Raj systems. पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेके आने के लिए बहुत कुछ कोशिश किया है फ्रॉम द अर्ली टाइम्स पर. सो वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग 1947 में मिला है, एंड वी हैव फर्स्ट इंट्रोड्यूस दिस पंचायती राज सिस्टम, especially get the constitutional support from 1992-1993 में ही मिला है. So it take a long time. In between, the government has studied a lot on that. It consists of mainly 4 committees ने इसके ऊपर पढ़ा है. One is बलवंत राय मेहता committee, then Ashok Mehta committee, GVK Rao committee, and LM Singhvi committee. Balwant Rai Mehta committee was appointed in 1957 to examine and suggest measures for better workment of community development program and national extension service. Especially it is mainly for local self-government को improve करने के लिए. Decentralized planning. Central से decentralized. Centralized planning means there will be all the power is concentrated in the center, but decentralized is the power is equally distributed in the lower layer. So this has been suggested by Balwant Rai Mehta committee during 1957. So it is the first step for Panchayati Raj. Then come Ashok Mehta committee, which was appointed during 1977 to suggest measures for revive and strengthen the declining of Panchayati Raj system in India. So Panchayati Raj system decline हो रहा है because it has no constitutional power. Constitutional power उसी टाइम में नहीं था. है बीच में ऐसा था जो लोकल का जो eldest people पहले जो लेके आया था ये पंचायत, they are trying to hijack it. Other than this, they don't have enough funding उसी टाइम में नहीं था. ऐसा बहुत कुछ प्रॉब्लम पंचायत सिस्टम में था. So how to strengthen this? ये पढ़ा है अशोक मेहता कमिटी ने during 1977. Then GVK Rao committee, which is being appointed by Planning Commission in 1985. So it recommended the development was not seen at the grassroots level due to bureaucratic resulting in Panchayati Raj institution and being addressed as grass without roots. तो ऐसा है, पहले सेंट्रलाइज प्लानिंग था, नहीं तो पंचायती राज सिस्टम था. उसके अंदर क्या था? देयर इज नो इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द पंचायत. पंचायत से इलेक्टेड मेंबर्स तो नहीं था. सो इट इज बीन कंट्रोल्ड बाय द ब्यूरोक्रेट्स. जो गवर्नमेंट सर्वेंट था, they were controlling. So sometimes they were coming from outside and they were controlling the population of some rural area. तो क्या हो? Corruption ज्यादा है. And sometimes they don't know the value or the consequence of what they are doing. इसका मतलब क्या है? The local people will be affected. Local people will be affected. ये तो हटाना है. So that is why they are saying that there is grass without roots. So base नहीं है.
ग्रास जल्दी खराब होगा, सूखा होगा, it will get destroyed. So there should be some development in the grassroots level. This is being made by G.V.K. Rao committee during 1985. And finally, 𝐿.M. सिंघवी committee अपॉइंट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने during 1986. This is mainly intended for recommending steps to revitalize the Panchayati Raj system for democracy and development. So how to give power to this Panchayat system? इसके लिए क्या कर सकता है? So ये लेके आया है 𝐿.M. सिंघवी कमिटी ने. So in that they have given constitutional के अंदर इसको लेके आना है. We have an article 40 के अंदर there it is saying that ऐसा एक कमिटी लोकल लेवल में बनाना है. So they have pointed it out, pointed किया है. तो इसको ज्यादा पावर देना है, लोकल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर लेना है, इसका अपना इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए which will be from the local people. Then only they can understand the problem of that particular region. If I am from a particular region, so I know what is the problem, main problem facing in that region, and I know most probably I know the most suitable suggestions for that, solutions for that. So as I said, 1992 में लास्ट में 87 में कमिटी, 86 में कमिटी ने बोला है, नाउ 1992 में कॉन्स्टिट्यूट किया है पंचायत की राज. दिस इज बेस्ड ऑन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. वी हैव लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसमें से 73rd अमेंडमेंट लेके आया है 1992 to give panchayat a constitutional value. The act added part 9 to the constitution. The panchayat also added the 11th schedule, which consists of 29 function item of the panchayat. तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लेके आया है, क्या ऐड किया है? पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन. पंचायत बोल के एक हेडिंग में पार्ट 9 लेके आया है, और 11th शेड्यूल में क्या दिया है, पंचायत को क्या क्या करना है ये भी इसके अंदर ऐड कर दिया. लेटर ड्यूरिंग 74th अमेंडमेंट में क्या किया है, पार्ट 9 ये ऐड किया है द म्युनिसिपैलिटीज. सो दैट इज आल्सो एक ग्रास रूट लेवल है. तो म्युनिसिपैलिटीज तो क्या करना है ये ऐड कर दिया. द पार्ट 9 कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल 243 टू 243O, उतना तक इसके अंदर ऐड किया. The amendment provides shapes to Article 740. तो पहले से था. तो what is Article 40? That is directive principles of the state policy. स्टेट में पॉलिसी को कैसे करना है, क्या करना है, ये तो पहले से डिस्क्राइब किया है. इसके अंदर बोला है organize village panchayat and provide them powers and authorities so that they can function as a self government. पंचायत को अपना सा पावर देना है, not by the bureaucrat. It should be controlled by the population which is residing there. सेल्फ गवर्नेंस करने के लिए ये पावर दिया है. तो क्या हुआ गया, द इलेक्शन प्रोसेस इन द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन विल बी हेल्ड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट से. इसमें दिया है, तो क्या दिया है, इसका इलेक्शन प्रोसेस होनी चाहिए इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट से. स्टेट गवर्नमेंट का उसके ऊपर नहीं है. दिस इज कंट्रोल्ड बाय एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्ट रूरल पंचायत में इलेक्शन करवाता है. इस एक्ट के अंदर
there is two parts. One is compulsory and another one is voluntary involvements. The compulsory provision must be added to the state law, which include creation of a new Panchayati Raj system. Voluntary provision, on the other hand, is the discretion of the state government. इसमें right now big problems है. Voluntary. पहले स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, यू हैव टू मेक पंचायती राज सिस्टम इन योर स्टेट. सेकंड दिया है वॉलंटरी प्रोविजन दिया है. सो व्हाट आर द पावर्स दैट शुड बी गिवन टू द पंचायत, ये डिसाइड करेगा स्टेट. उसमें स्टेट बहुत कुछ प्रॉब्लम बना रहा है, लाइक फंडिंग. नहीं, ये तो कुछ तो ऐसा है, एक पंचायत के अंदर एक इकोनॉमिक सोर्स है, लाइक मिनरल रिसोर्स है, तो ये मिनरल रिसोर्स इस पंचायत को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन स्टेट बोलता है नो, यू डोंट हैव द पावर टू डू दैट. तो खत्म है, दे कांट डू इट. दैट इज वॉलंटरी प्रोविजन है. इट इज द राइट ऑफ द स्टेट टू गिव असाइन ड्यूटी टू द पंचायत. Act is very significant step in creating democratic institution at the grassroots level in the country. The act has transformed the representative democracy into participatory representation है, ये participate people within the population से ही हम लोग पंचायत मेंबर्स, वार्ड मेंबर्स, पंचायत प्रेसिडेंट, ये सबको चूज करता है, elect करता है. So it's a participatory democracy हो गया है because of this panchayat. That is the provision which is given by the 73rd constitutional amendment in the panchayat level, and 74th amendment क्या है regarding the municipalities. So we have, based on this, the level of panchayat raj is being divided into village level, block level and the district level. Village level, it is the body working for the welfare of the village. So village level. So what is the governing body? The Panchayat Raj is a system of governance in the Gram Panchayat and the basic unit of the administration. सबसे base fundamental. इसके ऊपर आता है block level, district level. So सबसे नीचे आएगा village level. इसमें दिया है the number of members usually ranges from 7 to 31, लेकिन 7 के नीचे कभी भी मत जाना है. If the village is bigger, they can go up to 31. और इसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन कभी भी कम नहीं है, 7 के नीचे मत आना. The council leader is named as Sarpanch in Hindi. Each of the 5 members is a ग्राम पंचायत सदस्य और पंच बोलता है. इसके जो काउंसिल के अंदर 5 मेंबर्स है, सदस्य और जो पंच बोलता है, इसके सबसे काउंसिल लीडर को बोलता है सरपंच. In this system, each villager can voice his opinion in the governance in his village. Decision are taken without long legal procedures. तो ऐसा है, ग्राम सभा बुलाता है, उसी में even all the local citizens और कहो उसके अंदर जो विलेज के अंदर जो भी हो पार्टिसिपेट कर सकता है, and they can raise their issues there. मेरा इधर वो ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, तो रिप्रेजेंट कहा वही हम भी उधर है, हम भी उधर है, तो 5 लोग बोल दिया. So they will know what is the problem there. So direct participation in governance आ गया. So next level is the block level. So block level institution is called Panchayati Samiti. It is in the तहसील और तालुक level में इसका working हो रहा है. Its work for the village of the तहसील is that together are called development block. The Panchayat Samiti is linked with Grama Sabha and the district administration.
The Samiti is elected for 5 years and is headed by chairman and the deputy chairman. ये तो ऐसा है पंचायती समिति, it acts as a middleman. तो पंचायत से पंचायत ग्राम सभा से बहुत कुछ प्रॉब्लम they have identified and पंचायत क्या डिसाइड करेगा, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम्स है उसको उड़ा देगा एंड दे डोंट गो डायरेक्टली टू द स्टेट. वो लोग बोलेगा हमारा पंचायत में विलेज में इतना सा ये प्रॉब्लम है. दे विल रेज दैट इन द ब्लॉक लेवल. तो ब्लॉक लेवल में बहुत कुछ और विलेज पंचायत होगा. तो वो लोग इसमें से चूज करेगा, हाँ व्हाट आर द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स फेसिंग. तो वो सबको चूज करके वो लोग क्या करेगा, दे विल गिव दैट टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो एक्ट एज ए मिडिल और लिंकेज बिटवीन द तालुक विलेज लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल. Then the district level, that is सबसे upper most. At district level, the Panchayat Raj system is known as the Sila Parishad. Local level में block level में Panchayati Samiti. And it is look after the administration of rural area of the district and its office located at the district headquarters में है. तो इसके अंदर कौन होगा सबसे ऊपर वाला? चेयरमैन नहीं है, it is the district collector. So district collector directly representation of the state government का है. So वो सबसे आगे आ गया district collector और the district magistrate और the deputy commissioner DC. यहाँ अभी बोलने से DC deputy commissioner हो गया. कुछ स्टेट में district collector होगा. District collector और deputy commissioner has the power as the district magistrate. Magistrative power is in the hand of the district collector or the deputy commissioner. So ये लोग होगा सबसे ऊपर. So गवर्नमेंट को डायरेक्ट स्टेट से डायरेक्ट कंट्रोल हो गया है. The chairman of the पंचायत समिति forms the member of the जिला परिषद. तो जो ब्लॉक लेवल का सबसे ऊपर चेयरमैन है वो लोग होगा इसके ऊपर का मेंबर. तो जो विलेज से वो लोग कलेक्ट किया है उसमें से वो शॉर्ट लिस्ट किया है, वो प्रॉब्लम को लेके दे कैन कम टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल and they can raise the issues there. Then the district level पंचायत डिसाइड करेगी इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो उड़ाएगा. Who is doing that? It is the district head, that is the district collector of the deputy commissioner. So direct they are representing the state, so they can directly go to the state government. So that is why it is known as, it is the link between the state government and the Panchayati Samiti. So that is how it is being connecting. So village level से, that is a local level, that is a base layer. तो उधर से it will go to the block level. तो तालुक लेवल हो गया. तालुक लेवल उधर से क्या हो गया, वो तालुक लेवल का जो हेड है चेयरमैन है, that is the पंचायत समिति चेयरमैन, वो लेके आएगा प्रॉब्लम को उड़ा के आएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल में. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द, उधर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और डिप्यूटी कमिश्नर होगा हु वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ. सो प्रॉब्लम उधर तक डायरेक्टली पहुंचेगा एंड दे हैव द सॉल्यूशन आल्सो विद देम. तो इट इज इजी फॉर द गवर्नमेंट टू प्लान, स्टेट गवर्नमेंट टू प्लान. ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा सॉल्यूशन है ये. सो दे वांट टू वेरीफाई इट वेदर द प्रॉब्लम इज जेन्युइन, whether the solution is genuine or solution is suitable. If it is so, the government can fund. If it is not possible by the state government, the state government raise that to the central government. So easy, planning is very easy. पंचायती लेवल लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन कितना जल्दी ऊपर तक आता है. Sometimes sometimes individual, for me, maybe I am the man who is raising the problem which may reach up to the central government directly. तो 3-5 लेयर जाने से वो प्रॉब्लम ऊपर तक पहुंच गया है. That is the benefit of Panchayati Raj institutions in India. But the Panchayati Raj having lot of problems as well they are facing. One is lack of effective devolution.
The local self government is a state subject in the constitution. State subject है, and of consequently devolution of power and the authority of the panchayat has been left to the discretion of the state. Voluntary है, compulsory भी किया है, उसके साथ voluntary भी किया है, that the state will decide what are the power or the authority that should be given to the panchayat under the state. अभी अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड करेगा अरुणाचल पंचायती राज सिस्टम में क्या क्या पावर देना है. आसाम गवर्नमेंट अपना सा पंचायत को डिसाइड करेगा क्या क्या पावर उन लोगों को देना है, जैसे सब डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में सेम ही है. सो ऐसा एक यूनिटी नहीं है. इट इज नॉट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट. देन इनसफिशिएंट grants and funds. Despite constitutional empowerment, the local self ऐसा फंड का प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी लोकल लेवल से प्रॉब्लम ऊपर तक आ रहा है, बट क्या है स्टेट में क्या प्रॉब्लम है, देयर में भी शॉर्टेज ऑफ फंड. तो जो पैसा उन ये काम के लिए चाहिए, स्टेट समटाइम्स कांट प्रोवाइड इट दैट मच, उसको तो देने के लिए मुश्किल है. तो क्या करे स्टेट, क्या करेगा, अपना जितना पैसा है दैट विल बी गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल में देगा. डिस्ट्रिक्ट लेवल को ये डिवाइड करना है, जितना भी ब्लॉक लेवल है उस सबको ये पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो ये ब्लॉक लेवल का क्या हो गया, उन लोगों को जितना विलेजेस है उसको तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके देना है, तो पैसा कम होके आएगा. सो फॉर सॉल्विंग ऑल प्रॉब्लम देयर विल बी ऑलवेज फंड का प्रॉब्लम होता है. Still we are fixed. Then issues of सरपंच पति. So सरपंच पति खत्म हो गया है 2015 के बाद. प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया है अभी सरपंच पति कल्चर नहीं है इंडिया में, बट स्टिल देयर इज, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ प्रॉब्लम है. जेंडर प्रॉब्लम है, मेल डोमिनेटिंग है, वुमेन का उसी टाइम इलिटरेट रेट होगा, ये तो पार्शियल सोसाइटी होगा कि बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम ऐसा होगा, तो डोमिनेट करने के लिए मुश्किल नहीं है. सो मुश्किल है, मेन डोमिनेट है, तो वुमेन को लेके उधर वुमेन को ये 5 में बैठना मुश्किल है. नहीं ये तो SC/ST पॉपुलेशन है, नहीं ये तो जो दूसरा कास्ट है विच इज बैकवर्ड कास्ट बोलता है, उन लोगों को यहाँ लेके आना तो बोलेगा हाँ हम ऊपर कास्ट है, आपको तो नहीं देगा. ऐसा प्रॉब्लम वाज एग्जिस्टिंग देयर. तो क्या कर दिया है, इसको तो बैन करके डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्टेड मेंबर्स को लेके आना है, ये बोल दिया है. देन इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस. इवन सम ऑफ द ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत डोंट हैव द प्लेस टू सिट. समटाइम्स दे वर सिटिंग इन अ रूम, स्कूल का एक रूम में है, आंगनवाड़ी का रूम में है, उसमें छोटा सा एक जगह में दे आर बाय सिटी. देन लैक ऑफ सपोर्टिव स्टाफ्स. तो फंड का प्रॉब्लम है, चेयरमैन इज इलेक्टेड मेंबर है, लेकिन स्टिल फंड नहीं है, स्टाफ उतना ज्यादा गवर्नमेंट स्टाफ नहीं है इसके अंदर. पंचायत में चेक करने के लिए सेक्रेटरीज है, तो सेक्रेटरीज नहीं होगा कुछ टाइम में, नहीं है तो इंजीनियर्स नहीं होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर्स नहीं होगा, क्योंकि इन सबको डालने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है. सो समटाइम्स गवर्नमेंट विल रिलैक्ट ऑन दैट, समटाइम्स इट विल टेक टाइम. तो इस ये सब इट इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द लोकल पीपल देयर. देन लैक ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स. अभी ये गांव के अंदर एक सड़क आ रहा है, तो एक सड़क ऐसा है PWD ने बना के एक जगह तक आ गया, तो दूसरा किसी और ने बनाता है. सो कन्वर्जेंस है, ये एक जगह वो रोड को इसी गांव के बीच में खत्म है, तो ये दोनों कनेक्ट करना है. नहीं ये तो एक रोड तो खराब हो गया, दूसरा तो ठीक ही है. तो ये इस ठीक करने के लिए ये पंचायत सिस्टम के अंदर पावर नहीं है, बोल्स भी नहीं, क्योंकि देयर इज नो कन्वर्जेंस देयर. So these are some of the problems which is being facing by the पंचायती राज. तो पंचायती राज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीखना है, स्पेशली
It is 73rd constitution for panchayat and 74th for the municipalities. ये याद रखना कौन सी, and it came to exist during 1992 and 1993. ये दोनों पूछने से you can write. ये 92 देने से पहले 92 लिखना है. If it is not there and it is given 1993, you can go for that as well. Now we can move to region specific planning programs. So region specific and group specific planning programs. Region specific is important. इसमें सबसे important है region specific. It is mainly for specified region के लिए, इसका development के लिए planning होता है. Development problems are faced by certain areas arising out of their distinct geophysical structure and location and concomitant socio-economic development. So socio-economic development कम होगा उसी एरिया पे, नहीं तो geographical कुछ प्रॉब्लम होगा, स्पेशली फिजियोग्राफी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा, नहीं तो क्लाइमेट में कुछ प्रॉब्लम होगी, नहीं तो इसका लोकेशन कुछ अजीब जगह पे होगा. तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो उधर डेवलपमेंट कम होता है. सो देयर इज गिविंग स्पेशल importance for that particular region. It mainly consists of hill area development, drought prone area development, desert prone area development, command area development. ऐसा बहुत कुछ areas. Some of them are given here. First one is the hill area development program. हमारा इंडिया में hill area constitute 80% of the total geographical area of the country, and it includes 70 million population. This hill area development was launched in India during the 5th 5-year plan में लेके आया है. इसका main objectives है eco restoration, eco development and eco preservation. So hilly area ऑलवेज वल्नरेबल है, लैंडस्लाइड होने का चांसेस है, तो उधर घर बनाने के लिए मुश्किल है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इसी एरिया पे मुश्किल है. सो फॉर सॉल्विंग ऑल दिस देयर इज हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. इट आल्सो फोकस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज आर लोकेटिंग in these hilly areas. तो यहाँ soil conservation problem है क्योंकि landslide है, water conservation का problem है, then disaster management का problem है. तो ये सब control करने के लिए from the 5th 5-year plan we have developed a region specific planning for hill area, that is hill area development program. Then the second one is drought prone area development program. Drought means shortage of water. So shortage of water not only happens in desert region. Sometimes slope ज़्यादा है, hilly area पे slope ज़्यादा है. Sometimes there is failure of monsoon. इसके वजह से भी there is problem of drought आने का chance है. For tackling these problems in 1973-74, special problems for drought-prone area or drought-fragile area has been launched by the central government. Major problem, drought-prone area consists of vegetation cover, depletion of vegetation cover, increase in soil erosion and fall in groundwater level. ये सबको निकालना है. अभी drought prone area में क्या होगा, drought आने से even it will have problem of crop failure, agriculture failure भी होने का chances है drought prone area में. तो इसका तो effect तो minimize करना है. For that, we have drought-prone area development program. Then we have desert development programs. Desert. So it is desert है हमारे इधर
cold desert nahi hai. We have hot desert, especially in the northwestern region, and also have semi-arid regions as well in India. So for solving the problems of these regions, Desert Development Program has been launched in 1977-98. इसका main important चीज है to control desertification. Desertification, desert होने का chances तो कम करना है. And they should balance an ecological, they should maintain an ecological balance. It also aims at economic development and improvement the socio-economic development of poor and disadvantaged sections of the society. Then tribal area development programs. According to India census of 2011, we have 10.42 crores, almost 8 to 9% of the population is notified scheduled tribes, and of which 1.04 crores living in urban area है. So इन लोगों का problem solve करने के लिए there is tribal area development programs, that is तो ट्राइबल एरिया वो भी एक रीजन है, उधर ये भी प्लानिंग है, इसका भी प्लानिंग होता है हमारा कंट्री. देन कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम. सो कमांड एरिया मीन्स कमांड अंडर दी एक रिवर है, तो रिवर का कमांड एरिया, उसका वाटरशेड एरिया, उसका बेसिन एरिया के अंदर इसका कमांड है, वो एरिया में बहुत कुछ प्रॉब्लम होने का चांसेस है, स्पेशली इन द हायर रीजन्स. तो लैंडस्लाइड होने का नहीं, ये तो वो पानी का ड्रॉट होने का, फ्लड होने का बहुत कुछ प्रॉब्लम्स इसके अंदर होता है. ये सब कंट्रोल करने के लिए द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम ड्यूरिंग 1974-95. Improve the utilization of created irrigation potential and optimizing agriculture production and productivity from irrigated agriculture and through multidisciplinary team under a area development authority. तो ऐसा है इसके अंदर, तो ऐसा रिवर का एक कमांडिंग एरिया होगा, वाटरशेड एरिया का बेसिन एरिया होगा, इसके अंदर बहुत कुछ प्रॉब्लम है, स्पेशली डीलिंग विद सोइल एंड वाटर है. तो वाटर को कंट्रोल करने के लिए दे हैव इरिगेशन पोटेंशियल, इसको तो क्रिएट करना है. तो इरिगेशन इज डायरेक्टली डीलिंग विद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसके साथ डेवलप होगा, दैट इज कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम. सो वी हैव लॉट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर दिस ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट के अंदर बहुत कुछ प्रोग्राम्स है, दैट इज गिवन हियर, यू कैन रीड दिस. देन सेकंड वन इज द ग्रुप स्पेसिफिक प्लानिंग. कमांड एरिया डेवलपमेंट ये रीजन स्पेसिफिक प्लानिंग तो याद रखना है, इसके अंदर से पूछ सकता है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, ये पूछने का चांसेस है. देन ग्रुप स्पेसिफिक प्लानिंग यही है, द प्लानिंग कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया है दो तरह का, वन इज टारगेट एरिया, अनदर वन इज टारगेट ग्रुप. टारगेट एरिया इज द रीजन स्पेसिफिक एंड टारगेट ग्रुप हो गया ग्रुप स्पेसिफिक प्लानिंग प्रोग्राम. तो इसके अंदर दे हैव गिवन इंपॉर्टेंस टू मेनली टू डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. वन इज स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी aimed at the target group of small farmers and agricultural laborers, and which is operated since 1971, covering almost 1818 blocks in the country. तो इसको ये एजेंसी को लेके आया है. इसके अंदर क्या होगा, स्मॉल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर्स का ग्रुप है, एंड इट इज बीन ऑपरेटिंग फ्रॉम 1971 से ऑपरेट है 1818 ब्लॉक्स में. मेन एम इज टू रेज द इनकम लेवल ऑफ द फार्मर्स, स्मॉल स्केल फार्मर्स का और एग्रीकल्चर लेबर्स का इनकम डेवलप करने के लिए. अदर देन दिस देयर इज मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, सेम ईयर में 1971 में सेम ब्लॉक में लेके आया है. इसमें क्या है, इंस्टेड ऑफ स्मॉल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर्स देयर इज
It is dealing with marginal farmers and marginal agricultural laborers. तो एग्रीकल्चर में दो है, मार्जिनल फार्मर्स होगा, मेन फार्मर्स होगा. दो 60 डे 180 डेज के ऊपर जो करता है, दैट इज मेन वर्किंग लेबर्स है इसके अंदर. तो मार्जिनल बोलने से दे आर नॉट वर्किंग फॉर द होल ईयर. होल ईयर तो वर्क नहीं करेगा. दे विल वर्क लेस देन 180 डेज में एग्रीकल्चर एरिया में, फार्म एरिया में वर्क करेगा. तो दे आर दी मार्जिनल फार्मर्स. तो इन लोगों का डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग कमीशन ने 1971 में लेके आया है मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी. सो दीज आर ग्रुप स्पेसिफिक प्लानिंग प्रोग्राम्स इन मेजर ग्रुप स्पेसिफिक प्लानिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया. इसके अलावा दे हैव मेड लॉट ऑफ सोसाइटीज बनाया है, कमिटीज बनाया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाया है, बहुत कुछ. दैट इज आल्सो कम्स अंडर सोशियो इकोनॉमिक कमिटीज, cooperative societies ये सब बनाया. That also come under the scope of group specific planning program. But for planning commission, mainly to the small farmers development agency and the marginal farmers development agencies. So that's it. पंचायती राज important area है. सर Yes. ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था ना, एक इकोनॉमिक वुमेन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी यूनिट 7. Why not? क्या है? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, आप बाद में पढ़ाएगा ऐसा बोलते हैं. वो दैट वी हैव स्टडीड दैट ना. मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट सेम ही है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ना, हम लोग पढ़ा है ना. वाटरवे एयरवे से नहीं, वाटरवेज, एयरवेज, पाइपलाइंस ऐसा पढ़ा है ना, वही है ना. हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा. सर क्वेश्चन को थोड़ा ऐसा है. एक्चुअली आई एम लीविंग फॉर माय होम टाउन. तो अभी हमारा एग्जामिनेशन डेट तो डिक्लेयर नहीं किया ना, टीजीटी का. अरे जी 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 सर. तो उसके जब डिसाइड करेगा ना, तो क्वेश्चन पेपर उसी टाइम में वी कैन डिस्कस. उसके पहले ना हम कुछ क्वेश्चन बैंक्स देगा, ओके, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देगा. उसका तो थोड़ा अच्छा से प्रिपेयर करना है. ओके जी सर, थोड़ा आपको भी इम्पोर्टेंस, क्योंकि पीजीटी का वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ना, हम अभी वही क्वेश्चन बैंक बोला है ना, क्वेश्चन बैंक देगा उसमें से है ना बना के. सर पीजीटी का देखा है ना, वो जो ये आर ऑफ सिलेबस बहुत ज्यादा आया है ना. हाँ वही तो वो असली में है ना, ज्योग्राफी में देयर इज नथिंग आउट ऑफ सिलेबस. वर्ल्ड का जो भी पूछेगा दैट इज कम्स अंडर द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी के अंदर ही आएगा. ओके जो इसमें दिया था ना, हाँ, सिलेबस में दिया ना, उसके बाहर से भी पूछ सकता है. तो पीजीटी में बहुत ऐसा हुआ है, आप उसको थोड़ा देख के आप खुद का सकते, थोड़ा नोट थोड़ा प्रोवाइड कर. वही बोल रहे हैं ना हम, वही बोल रहे हैं क्वेश्चन बैंक्स ना बना के देगा बोल दिया ना. वो चेक, वो उसका है ना, क्वेश्चन पेपर साथ उसके साथ ये भी देगा, आंसर भी देगा ना, आंसर वो भी अच्छे तरह देखना है. ओके ओके देन. थैंक यू.